Is it true that a shot of rum can act as a panacea antidote to cure common cold and flu? The viral post claims so. Let's have a look at the viral video. से करें दोस्तों सर्दी के इलाज सबसे पहले हमें एक मिट्टी का बर्तन लेना है और इस बर्तन को हमको गैस पे गर्म करने के लिए छोड़ देना है। हम इसको जब तक गर्म करेंगे जब तक ये बिल्कुल लाल ना हो जाए। उसके बाद हमें इस मिट्टी के बर्तन को हटाना है और इसको एक अलग प्याले के अंदर खाली कर लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी फेवरेट ओल्ड मॉन्क रम। ओल्ड मॉन्क रम डालने के बाद हमें इस पूरे बर्तन को ढक देना है अप्रॉक्स 1 मिनट के लिए। 1 मिनट ढकने के बाद हमें इसको बर्तन को वापस से हटाना है और ये जो हमारा मिट्टी का टुकड़ा था इसको वापस हटा देंगे इस प्याले के अंदर से और ये जो रम है हमें इसे पोर करनी है गिलास के अंदर। ध्यान रखिए इसे हमें रात को सोते वक्त लेना है और सोने के बाद हमें कोई भी चीज़ खाना या पीनी नहीं है। सोते वक्त हमें इस चादर ओढ़ के सोना है और सुबह तक आप देखेंगे कि आपकी बॉडी से जो कफ है और जो जुकाम है वो बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। जिन लोगों ने अब तक नुस्खा नहीं ट्राई करा एक बार तो ट्राई करना बनता है। Alcohol cannot treat or cure common cold. Colds are the result of a viral infection. Colds usually causes inflammation of the membrane that lines the nose and throat. Contrary to what people believe, cold weather or being chilled does not cause cold. You can get cold and cough throughout the year during any season. No health authority or doctor would ever recommend having rum shot or any alcoholic toddy to fight cold. Also, as most colds are mild and short-term illnesses, it may not require medical treatment and subside within 10 to 14 days. According to CDC, pregnant women, people below the age of 21, people on certain medications or having certain medical conditions should avoid consumption of alcohol. In short, alcohol gives you a false sense of warmth, but it brings down the core temperature of your body. For more such health fact checks, follow Newsmeter.